Hello everyone, welcome to the official channel of Dinesh Academy. So आज सेशन होची आमर थर्ड एमसीक्यू सेशन जो हिस्ट्री रो ऑलरेडी दीटा सेशन अपलोड हो जाइए दैट इज टॉप 30 एमसीक्यूज एंड टॉप 20 एमसीक्यूज. तो सेशन रो मोटिव होची आपनकर जहाँ भी आपन एमसीक्यू थ्रू आपन रिवीजन सा प्रैक्टिस हबो जेडा आपन आगु जहाँ भी आपन एग्जाम देबे सेरा पय आपन हेल्पफुल हबो. को भी आपन एग्जाम अपियर करंदु स्टेट लेवल हो सेंट्रल लेवल हो जेहेतु क्वेश्चंस गुडा एमसीक्यू क्वेश्चंस आपण वीडियोटा देखिले जस्ट आपण नॉलेज पढ़िबो एंड आपण रिवाइज भी हबो. तो वीडियो रे हम कौन करथिलु ना फर्स्ट दिन सेशन रे ऑलरेडी टॉप 20 एमसीक्यूज मेनली आपनकर जो मॉडर्न हिस्ट्री ता ऊपर अछि. आज होची थर्ड वीडियो दैट इज टॉप 20 एमसीक्यूज ऑन हिस्ट्री दैट टू बी ऑन मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू सेशन सरला पारे विल गो टू मेडिएवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री. तो आज स्टार्ट करियो हमें थर्ड सेशन रो फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, which of the following pairs are correctly matched? तो किछटा पेयर देछि और करेक्टली मैच पचारछि. तो आजिकली प्राय एग्जाम्स रे आपनकर जो एमडी वाला क्वेश्चंस अछि से आपनकर वन लाइनर न होई एमती आपनको मैच द फॉलोइंग टाइप रो कि करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टाइप रो एमती वाला क्वेश्चंस आछि. तो अपन देखिले आपनको इजी हबो करिया पय. तो देखि देबो क्वेश्चन में कोन देछि ना which of the following pairs are correctly matched. तो गोटे हला फर्स्ट हला ब्रह्म समाज, देव समाज, आर्य समाज एंड रामकृष्ण. तो आपनकर मेन लेफ्ट साइड देछि आपन किछटा ऑर्गेनाइजेशन किछि आपनकर ऑर्गेनाइजेशंस एंड राइट साइड देछि तार फाउंडर्स. तो एटा ब्रह्म समाज जो स्वामी ब्रह्मानंद एटा भूल. आमी जानछे ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय. ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय. ओके, नेक्स्ट देव समाज. तो देव समाज वाज फाउंडेड बाय पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री. तो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री जे थिले ही वाज एन एक्टिव मेंबर ऑफ ब्रह्म समाज. तो से अर्लियर ब्रह्म समाज रो गोटे मेंबर थिले बट लेटर ऑन ही लेफ्ट ब्रह्म समाज. ये ब्रह्म समाज से मन लीव करी से तांगा निजर गोटे ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करले दैट इज देव समाज. देव समाज रो अलगा ना भी होचे आपन देवधर. देव समाज रो अलगा ना भी आपन होचे देवधर. ओके, and it was founded by Pandit Shiv Narayan Agnihotre. Next, so a statement ta correct अछि. Third होछि आर्य समाज. आर्य समाज was founded by Swami Dayanand Saraswati and एटा हम तो जानछे आर्य समाज was founded by Swami Dayanand Saraswati in the year आपनकर 1875. Swami Dayanand Saraswati अपन फाउंड करथले आर्य समाज. Their main principle थिला abolition of idol worship, monotheism, and he played an important pivotal role in spreading education spread kariya, national education spread kariya बहुत important role play करथले. लास्ट असला आपन रामकृष्ण मिशन and it was founded by Swami Ramakrishna mission. एटा भूल अछि. Ramakrishna was founded by Swami Vivekanand. It was founded by Swami Vivekanand. Okay, तो स्वामी विवेकानंद आपन गोटे डिसाइपल रामकृष्ण रा जे गोटे ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करथि दैट इज और इज गुरु रामकृष्ण मिशन जो गोटे फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन में जेटा मिलिटरी काम करंती माने वॉलंटरीली काम करंती लाइक फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल. तो वॉलंटरीली ताके लोकंगर अपलिफ्टमेंट पे काम करंती गोटे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इट वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद. दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. ऑप्शन 2 and 3 आर करेक्ट. से पचारला ए भितरु को ऑप्शन टा करेक्ट अछि. तो आपन ऑप्शन सी दैट इज ऑप्शन 2 and ऑप्शन 3. ऑप्शन 2 and ऑप्शन 3. ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन. बहुत भलो क्वेश्चन. वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग वाज ए पार्ट ऑफ. तो ए सब बुक भितरु वंदे मातरम कहार गोटे नेशनल सॉन्ग से को पार्ट बुक रो पार्ट थिला. तो इट वाज द पार्ट ऑफ आनंद मठ. It was the part of Anand Man and it was written by Bankim Chandra. It was written by Bankim Chandra and it was adopted as the national song on 24 January 1950. 24 January 1950 रे ए वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग हिसाब रे अडॉप्ट करा जायतिला and it was first sung by. तो एक नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम अच्छी तब फर्स्ट टाइम की गाइथिले दैट वाज फर्स्ट सॉन्ग बाय 1896 बाय रविंद्रनाथ टागोर. ओके, रविंद्रनाथ टागोर. तो रविंद्रनाथ टागोर 1896 से वंदे मातरम को यूज करेगी से जो नेशनलिस्ट मूवमेंट लाइक इट वाज ए मार्चिंग सॉन्ग जो पैरेड होतला मार्च होतला
से लोक वंदे मातरम सॉन्ग को यूज करिकी निजर कौन लाइक मार्चिंग सॉन्ग रे नेशनल मूवमेंट रे स्प्रेड करे हेल्प करथिले। तो रविंद्रनाथ टैगोर ताको 1896 रे फर्स्ट यूज करथिले एंड इन ऑन 1950 लाइक 24 जनवरी रे ताको नेशनल सॉन्ग हिसाब रे अडॉप्ट कराइथिला and it was written in the it was taken from the book Anand Math. It was taken from the book Anand Math. Okay, next. The only session of the Indian National Congress which was presided by Mahatma Gandhi. So it was a previous year question. तो से पचारची महात्मा गांधी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेतिला तो से गोटे ही सेशन से अटेंड करथिले एंड दैट वाज को सेशन अमंग दिस फॉलोइंग को सेशन डागो से अटेंड करथिले को सेशन डागो से अटेंड करथिले। सो इट महात्मा गांधी जो फर्स्ट सेशन द ओनली सेशन अटेंड करथिले दैट वाज बेलगांव इट वाज ओनली सेशन व्हिच वाज प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी ओके ठीक अच्छे एंड इट वाज अपना जो ओनली सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो महात्मा गांधी प्रिसाइड करथिले दैट वाज द 39th इट वाज द 39th सेशन इट वाज द 39th सेशन it was the 39th session okay it was the 39th session just a second okay let's start so Belgaum answer thila Belgaum and it was the 39th session the 39th session हेतिला जो अपन year 1924 रे हेतिला and it was the only session that was presided by Mahatma Gandhi. It was the only session that was presided by Mahatma Gandhi. The Belgaum session Indian National Congress was both important session because that was the only session that was presided by Mahatma Gandhi. Okay, next question number 4. Which operation was started by the British government to arrest the leaders of Quit India movement? So जो Quit India movement हेतिला अपन जानते हुए Quit India movement जो अपन in the year 1942 8 August रे अपन launch हेतिला under the leadership of Mahatma Gandhi. Under the leadership of Mahatma Gandhi, one important movement launch हेतिला in the year 1942 that to Bombay launch हेतिला अपन and it was under the leadership of Mahatma Gandhi and he gave the slogan अपन जो do or die the do or die slogan जो देथिले महात्मा गांधी it was during the Quit India movement. It was during the Quit India movement. So Quit India movement was launched mainly after the failure of Cripps mission. The Cripps mission जो fail हेतिला तापरे आपनकर Quit India movement start हेतिला and Quit India movement played an important role. से almost Quit India movement पूरा British administration को paralyze कर देतिला and से एते ही impactful थिला Quit India movement that Britishers माने immediately arrested the leaders. माने Quit India movement को stop करिया पई माने immediate arrest करले because Quit India movement रो impact बहुत अधिक थिला like because all sections of society सब section of society including Hindu and Muslims both ସେମାନେ ଆସିକି ମାନେ voluntarily large scale large mass से ସେମାନେ ମାନେ participate करथिले and therefore the British wanted to arrest them immediately and they launched the British government launched a operation जिससे arrest करिया start कर leaders मानको and that operation is called as Operation 0R and that operation is called as Operation 0R. Okay, so this was Operation 0R. Next, moving to the fifth question. Fifth question, बहुत भलो question दा. So, where was the first all Indian Kisan Sabha formed? So, गोटे leader थिले that is Sahajanand Saraswati. Okay, and see first रे बिहार किसान सभा. Okay, बिहार किसान सभा से form करथिले to understand the grievances of the peasants जो farmers मानकर peasants मानकर जो दुख थिला and especially against the जमीदार to जमीदार against जहाँ भी ताकर problems थिला ताकू से organization रे से जिनको को deal करिया पे issue deal करिया पे से first बिहार किसान सभा बिहार provincial किसान सभा form करथिले and later on see ही all India basis रे form करथिले all India किसान सभा
in the year 1936. In the year 1936, 11th April. Okay, 11th April 1936, and it was launched in the city of Lucknow. And it was launched in the city of Lucknow. Their president thile Shahajanand Saraswati. Their president thile Shahajanand Saraswati. Okay, and तांकर main जो All India Kisan Sabha रो main जो purpose थिला, that was reduction in land revenue and abolition of zamindari system. Abolition of zamindari system. तो जमींदार सिस्टम को अबॉलिश करबा और लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस करिया पाई से ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म करथिले. से ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म करथिले के शाहजानंद सरस्वती इन एट लखनऊ. ओके, तो मो करेक्ट ऑप्शन हबो लखनऊ. ओके, नेक्स्ट बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखंतु. Okay, question लिखले. On April 12, 1944, Subhash Chandra Bose hosted the INA flag in a town. In which state or union territory is the town now? So specially आपनकर after World War II आपनकर जो INA रो जो हेडक्वार्टर माने INA जो माने आपनकर जो ऑर्गेनाइजेशन थिला सेही आपनकर गोटे एरिया थिला मोरियां. ओके, जो मोरन एरिया थिला डिस्ट्रिक्ट थिला से डिस्ट्रिक्ट रे सुभाष चंद्र बोस with the help of the local people he hosted the international flag, and that district is presently in the city of Manipur. So it is presently in the city of Manipur. Okay, so after the World War II, Subhash Chandra Bose hosted the international flag with the help of the local leaders and local people in the area called as Moirang district, which is present in Manipur. So Manipur re Moirang district re apanangara the international flag host karthile. So vitru koda apan correct option, that is apanara Manipur. So among this following, the correct option is Manipur. Okay, next question da important question देखंतु. Okay, why the Haripura Congress in 1938 remains a milestone in Indian freedom struggle? So mainly question da कहिछि that why is the Haripura Congress session? So जो Haripura Congress session थिला सेटा कौन पई Indian freedom struggle रे गोटे milestone थिला. So at first आमे जानिबा जे 1938 जो Haripura session हेतिला सेथिरो प्रेसिडेंट थिले आपनकर सुभाष चंद्र बोस. So Subhash Chandra Bose was elected as the president of Indian National Congress in the Haripura session against the will of Mahatma Gandhi. So Mahatma Gandhi will against be Subhash Chandra Bose को first president declare कराइतिला in the Haripura session. That is point 1. Second point होची Haripura session रे गोटे important माने discussion हैतिला, that was establishment of planning commission, माने introduction of idea of planning commission. जो प्लानिंग कमीशन हेतिला, प्लानिंग कमीशन जो हेतिला तार आइडिया को फर्स्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस करैतिले, that was in the Haripura session. That was in the Haripura session, and that idea was given by Jawaharlal Nehru. So Jawaharlal Nehru गर idea थिला of establishment of the planning commission. So ए भितर correct option होचे because Congress introduced the idea of a planning commission. So the planning commission introduced by Jawaharlal Nehru, and Haripura session president thile, that was Subhash Chandra Bose. जो अपना 51st session हेतिला, and that was in the year 1938.
1938. Okay, so correct option more kon habo, correct option habo mara option C, that is Congress introduced the idea of a planning commission. Okay, next question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 टा बहुत भलो क्वेश्चन टा एंड बहुत इजी क्वेश्चन अपन जानथिबे, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन कुछ नीड भी नाही. Which of the following powers was the first to establish trade links with India? So among these foreign powers first किए थिले जो आपनकर ट्रेड लिंक एस्टैब्लिश करथिले. तो फर्स्ट थिले आपनकर पोर्तुगीज. तो अपन जानछथि वास्को ड गामा आसला परे द वेरी फर्स्ट पावर जी आपनकर इंडिया रे कॉलोनियल पावर जे आपनकर ट्रेड लिंक सेट करथिले दैट वाज पोर्तुगीज परे होचने अपन डच एंड तापर होचने अपन फ्रेंच. द वेरी फर्स्ट कॉलोनियल पावर होचे आपनकर पोर्तुगीज. द वेरी फर्स्ट कॉलोनियल पावर होचे आपनकर पोर्तुगीज. तो करेक्ट ऑप्शन मोर कोन ना, करेक्ट ऑप्शन होचे हमर पोर्तुगीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 रे देखंदो. Okay, who was the architect of communal award? So आपण सुनथिबे communal award. Who was the architect of communal award? So communal award was a set of instructions or set of elections जोड़ा आपनकर depressed class सेमानंगु सेपरेट इलेक्ट्रोड दबा पई जा डिक्लेयर हेतला, सेपरेट इलेक्ट्रोड जो दबा पई डिक्लेयर हेतला, that was declared by the communal award. And that was declared during the second round table conference. In the year 16th August 1932. Okay, 16th August 1932 second round table conference time रे आपण communal award टा depressed classes लोक मानकर separate electorate दबा पई आपण communal award declare हेतला. And that was communal award was who was planned by the man known as Ramsay MacDonald. So Ramsay MacDonald थिले जे communal award को declare करथिले and he gave the communal award to B.R. Ambedkar, and that was during the second round table conference in the year 1932. जोड़ी आपनकर depressed class लोक मानको separate electorate दिया होतला. And the idea of separate electorate, जो the separate electorate, okay, the idea of separate electorate was introduced in which act? Comment section में जानेबे. The idea of separate electorate, the first time the idea of separate electorate आसिला सेरा आपनकर who act रे आपनकर सेरा इंट्रोड्यूस करा हेतिला. Comment section रे तेरा आंसर ता आपन कहबे. This was the answer. Communal award was given by Ramsay MacDonald. Okay, next question number 10. So question ला होची, who among the following has started the public work department in India in 1848? सर क्वेश्चन ला माने होची among the following viceroys किए आपनकर public work department first इंडिया रे स्टार्ट करथले in the year 1848. तो हम जानचे that Lord Dalhousie was the viceroy of India from 1848 to 1856. So 1848 to 1856 से थिले जे he played an important role. तांको इवन मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाउतला. तांको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाउतला. ओके, एंड he played a pivotal role, बहुत सारा important role प्ले करथले. जेमिति he first introduced the Widow Remarriage Act. The Widow Remarriage Act introduce करथले in the year 1856. Okay, he first introduced the railway line. In the year 1853. जो आपनकर बॉम्बे it was introduced in the year of 1853, and he also established
एंड एटा आपन आंसर जो फर्स्ट रेलवे लाइन देथिले क्विज रा आपन माने आपन कमेंट सेक्शन मेंशन करिए सेटा कोडू फर्स्ट रेलवे लाइन आइला एंड नेक्स्ट ही इंट्रोड्यूस्ड 1854 से इंट्रोड्यूस करथिले जो पोस्ट ऑफिस एक्ट से इंट्रोड्यूस करथिले 1854 रे एंड he was mostly famous for his doctrine of lapse policy. He was mainly famous for his doctrine of lapse policy. So Lord Dalhousie बहुत सारे important काम करथिले and he played an important role in strengthening the infrastructure हो आपण public work हो आपणकर educational sector हो कि आपणकर विडो social reforms in the widow remarriage abolition of female infanticide ये सब जिनस को आपण से लॉर्ड डलहाउसी बहुत important role play करथिले and it was by Lord Dalhousie. Okay, next question number 11. The famous Lucknow Pact of 1916 was signed between, so upon the famous Lucknow Pact upon 1916 re hetila, so it was signed between the Indian National Congress. It was signed between the Indian National Congress and the Muslim League. So Indian National Congress and Muslim League upon the dijon jago promised, they agreed that they will both be united and they will fight against जहाँ भी ब्रिटिशर्स मान अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल पावर अगेंस्ट से फाइट करिए एंड इट वाज द इम्पोर्टेंट आउट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट वाज हिंदू मुस्लिम यूनिटी. सो मोस्टली हिंदू मुस्लिम यूनिटी हेतला आफ्टर द लखनऊ पैक्ट एंड इट वाज साइन बिटवीन INC एंड मुस्लिम लीग ऑन बिहाफ ऑफ बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना. So, Indian National Congress was signed between Bal Gangadhar Tilak and Muhammad Ali Jinnah. So, correct option of Bal Gangadhar Tilak and Muhammad Ali Jinnah. Okay. Next. Question number 12. The word Swaraj was first used by Dadabhai Naoroji in the session held in. So, o session re Dadabhai Naoroji first word Swaraj use करथिले. So it was in the year 1906, that is Calcutta session. जोड़ी से प्रेसिडेंट थिला दादाभाई नौरोजी and he first introduced the word Swaraj. The meaning होची one's own good. निजर country जहाँ भी good prepare हबे जहाँ भी production हबो निजे use करिवाडा, that was called as Swaraj. And दादाभाई नौरोजी कहथिले he was inspired the word Swaraj from Dayanand Saraswati book सत्याग्रह प्रकाश जो बुक थिला Dayanand Saraswati जो he was the author of the book Satyat Prakash. तांको से book रू से inspire हेतिले and he used the word Swaraj and that was during the Calcutta session in the year 1906. 1906 रे दादाभाई नौरोजी आपनकर first Swaraj word use करथिले. Okay, and the word Swaraj was taken by the book Satyat Prakash, which was written by Swami Dayanand Saraswati. Okay. Next. The question na padhantu. The question in the Government of Indian Act 1990, the function of provincial government were divided into reserved and transfer subjects, which the following were treated as reserve subject. So 1990 हम जानचे 1919 रो एक्ट ताको आपनकर अलगा ताको कोन कहउची ना मोन्टैग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म. अपन जानथिबे 1919 एक्ट इज आल्सो नोन एज मोन्टैग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म एंड से रिफॉर्म रे कोन हेतिला द सेंट्रल एंड द प्रोविंसेस both were given the power to make laws on the respective list. जो जहाँ भी तांगर लिस्ट थिला सेमानंग ऊपर रेस्पेक्टिव लॉ लिस्ट ऊपर लॉ करिया पई सेमानंग अथॉरिटी दिया हेतला. So the provincial list रे जो provincial list were subjects, the provincial subject was again divided. Provincial subject को पण दिरा डिवाइड करा हेतला. गोटे होची आपण रिजर्व आउट होची आपण ट्रांसफर्ड. गोटे होची रिजर्व आउट होची आपण ट्रांसफर. ओके, ट्रांसफर्ड. So reserve subject जो list मान जो जहाँ भी laws related to reserve subject was to be done by the governor and his executive council. Governor और executive council मिसिकी अपन reserve subject जहाँ भी reserve list जहाँ भी
subjects अच्छी से law बनेबे से law बनेबे. At the same time, transfer subject was to be done by the governor and legislative council with the help of legislative council. So reserve subject legislative council रो किसी need नथिला, transfer subject आपनकर legislative council रो need थिला, and reserved was to be done by the governor and executive council, and it was governor with the help of legislative council. So reserve subject रे हमर mostly जाउतला law and order related. Law and order related जोड़ा होची आपन जेमति law land मान law इगुड़ाक जेमति administration of justice, land revenue and police, administrative justice, land revenue and police. Same time transfer subject अपन कौन थिला जेमति अपन education, local government, agriculture ये सब जिनस. Okay, so reserve subject रे आपनकर law and order, land law and order related थिले, and transfer subject रे अपन subject थिले education, local government and agriculture. तरे local government हमरो जिबा आपनकर transfer subject रे, बाकी सब आपनकर हबो reserve subject. The correct option मोर कौन 1, 3, 4. Correct option मोर कौन 1, 3, 4. Okay, this one. So the correct option is 1, 3, and 4. Okay, so this was 1919 Act, also known as Montague-Clansform Act, and it was an important act अपन जानते हुए, and it जोड़ी अपना दिला subject distribute हितला, and these are the answers. Okay. Next, question number 14. Question number 14. Which of the following pair is or are not correctly matched? तो हमारा question होची not correctly match. तो कोड़ा correctly match नहीं. तो first असला Lord Ripon. अपन जानते हैं introduction of Ilbert Bill is correct. Lord Ripon played an important role in the introduction of Ilbert Bill. John Lawrence helped in setting up a combined commission, और जो से commission नाथला Campbell Commission. So he played an important role in establishment of a combined commission, Campbell Commission, to discuss about the matters related to the frequent famines. The frequent famines होतला ताको discuss करिया पे से Campbell Commissions को introduce करथिले, and अपना last video रे हमर हेतिला कि first famine commission केबे हेतिला and तारो president के थिले. So president तो नहीं, first famine commission को के head करथिले. So अपन previous video रे first famine commission विषय रे जहाँ जहाँ details दिया है सेगुड़ा mention कराई छे अपन पढ़ी परिवे. And first famine commission रे अपन mainly commission रे जो famine code introduce हितला, जोठी अपन famine related issues कि केमती famine time रे अपन land revenue को reduce करा हबो, better irrigation facilities provide करा हबो, से सब जिनसे discuss करा हितला. So this is correct. This is also correct. Next is Lord Mayo, annexation of Upper Burma. Wrong, because annexation of Upper Burma was done by Lord Dufferin and not done by Lord Dufferin. Last होची Corona Darbar at Delhi, जो Grand Delhi Darbar हेतिला, and that was done by Lord Lytton. That was done by Lord Lytton. Okay, Lord Lytton. Okay. So the correct option कौन हबो? The correct option हमारा which the following are not correctly matched. So 3 और 4 correctly match नाहंती, तले हमारा correct option हबो 3 and 4. Correct option हमारा 3 and 4. Mostly पिला confusing 1 and 2 मारिबे, but not correctly match. तो हमारा option कौन हबो 3 and 4. Option कौन हबो 3 and 4. Okay. Next. Next question देखो तो. Okay, the drain of wealth from India to England began after the following. The drain of wealth अपन जानते हैं, drain of wealth माने से माने जिनती इंडिया रो easily raw materials को export करते ले, and जो purchase goods थिला तापरे बहुत import जो imported goods थिला तापरे heavy duties, heavy tax लेवाई करते ले, and से पहले the drain of wealth जोड़ा India from India to England began हला, the starting procedure कौन थिला? The starting procedure थिला grant of Diwani. So Diwani rights मिलथिला after the Battle of Buxar in the year 1764, जो आपण था आलम टू Diwani rights देथले जो East Indian Company को from especially from the provinces of Bengal, Bihar and Odisha. सेथरो जो Diwani rights देथले stay from the very beginning आपण the drain of wealth process start हेतला, drain of wealth process start हेतला, and drain of wealth को नेकी drain theory propagate करथिले आपण जानथिबे दादाभाई नौरोजी.
So Dane theory was propagated, was the idea was propagated by Dadabhai Naoroji. Dadabhai Naoroji. And the drain of wealth, poverty related, they would a book be like poverty and un-British rule in India. Poverty and un-British rule in India. Poverty and un-British rule in India. Okay, so drain of wealth ra mane hochi India jete bhi wealth ila that was gradually transferred from India to England. Starting hitla from that raw metals को easy cheap rate रे ସେମାନେ नौतले export करते but जो duties मन जो important products थिला तापरे heavy tax लगाउथले. The drain of wealth started from the grant of Diwani. It was started from the grant of Diwani. Okay, next. Next वाला, which of the following pairs is or are correctly matched? So केतरा जिनस अछि ए भितरु कोडा is or are correctly match अछि. First होछि father of civil service, Lord Cornwallis. ठीक अछि. Lord Cornwallis was also known as father of civil service. He played an important role in bringing changes in the civil service. So civil service में changes आने आरे से बहुत important role play करथिले. Father of police service, Lord Clive. Wrong. Father of police service भी अपन केबे Lord Cornwallis को पाउथला because he also brought a number of reforms in the police department. The police sector रे भी बहुत सारे reforms आनथिले. And father of judicial service was known as Warren Hastings. And father of judicial service was known as Warren Hastings. So my correct option hobo option 1 and 3. Correct option more kon hobo na option 1 and 3 only. 1 and 3 only. Hala. Next, moving to the next question. Question number 17. Question number 17. The first tribal group which rose against the British was. So एमान भितरु ए जो ट्राइबल ग्रुप्स अछंती ए ग्रुप्स मान भितरु से फर्स्ट ट्राइबल ग्रुप के थिले जो माने ब्रिटिशर्स रो अगेंस्ट फाइट करथले. जो माने ब्रिटिशर्स रो अगेंस्ट फाइट करथले. They are Khasis. Okay, so the Khasis were the first tribal group which rose against the British rule. And Khasis जानती अपना, they reside in the Khasi and Jaintia hills. Okay, जो खासी एंड जयंतिया हिल्स अच्छे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट रे से माने सेठी माने they live in the Khasi and Jaintia hills. They belong to the Khasi and Jaintia hills, and the Khasis were the first tribal group that rose against the British India. That rose against the British India. So the correct option कौन होगा? Correct option होगा Khasis. Okay. Next. In which year Raja Ram Mohan Roy founded the Brahmo Samaj? हमें already question the beginning रे first question रे हम first very question जब थिला इतना हमर थिला कि ब्रह्म समाज के फाउंड करते. ब्रह्म समाज was founded by Raja Ram Mohan Roy and ताको father of Indian Renaissance modern Renaissance हुआला जे बहुत important role play करते. जिनकी ब्रह्म समाज रो concepts थिला abolition of idol worship, propagation of worship of one god, the monotheism, one god who worship kariba, child marriage को माने कौन abolish करिवा, against child marriage, widow remarriage को कौन encourage करिवा. These were some of the concepts of Brahmo Samaj, and Brahmo Samaj was one of the initial social reform organization. बहुत ही गोटे initial social reform organization हेतिला, and it was by Raja Ram Mohan Roy in the year 822. In the year 822. Okay, the correct option हमारा 828. Sorry, not 22, it is 28. Okay. Next. Question number 19. Question number 19 रे देखंदु बहुत important revolt question दा. It is based on the revolt. जो revolt हेतिला tribal revolt ता ऊपर आपन question दा पचारछि. Okay, arrange in the correct chronological order the revolt against the British and find the correct answer from the quotes given below. So जो बहुत सा revolt हेतिला ताको हमको
स्पेशली मैच द फॉलोइंग टाइप रो से करिया पे कहिछि। सो द वेरी फर्स्ट रिवोल्ट वाज बाय द आपण कोन भाबुछन फर्स्ट रिवोल्ट कोडा हेतिबो? Yes, the very first revolt was the Sannyasi revolt. Sannyasi revolt that was mainly in the Bengal area, like Jalpaiguri area. The Sannyasi revolt, the first revolt hitla, and it was around the year 760. So it was around the year 1760. Sannyasi revolt पर आपन कोल revolt hitla, and chronological दे देछि खाली मते match the following करे पे कहिछि। हाँ, the cold revolt hitla आपन around the year 831. 831. Okay, आपन संताल revolt हेतला in, and it was the Santalis, it was by the two brothers आपन जो मुर्मू brothers थिले से माने आपन संताली revolt को first start करथिले, and it was in the around the year 1855 and 56, especially in the areas of that day Bihar जोड़ा modern day झारखंड रे अछि सेली आपन मुर्मू brothers थिले से संताली revolt start करथिले, and last is the Mopla revolt which was in the Malabar region of Kerala. Malabar region of Kerala हेतला in the year 1921 by the Muslims. The Muslims थिले से माने हिंदू जमींदार सब ब्रिटिश रूल का अगेंस्ट रे they will revolt करथिले. So this is the correct. Sannyas 1760, Kohl हेतला 1831, Santal 1855 and Mopla हेतला 1921. So this is the chronological order रे match the following हेतला. Okay, next. Azro session the last question. Hind Swaraj, a book by Mahatma Gandhi in 1909 was originally written in so Sirang Nijo language, Nijo local language लिखते that was in Gujarati. So Hind Swaraj जो book थिला महात्मा गांधी रो से ताको लिखिथिले in the year 1909 by in the माने कोन language Gujarati, in the language Gujarati. Okay, so आज रो सेशन थिला हमर top 20 MCQs, धीरे हम टॉप 30 MCQs and टॉप 40 MCQs करिवा। इवेंचुअली आपण डेली MCQ रिविजन्स हबो जोरा आपण को आगर जहां भी आपण एग्जाम्स आछि आपण तरा बहुत हेल्पफुल हबो। सो आज 20 थिला, नेक्स्ट हम 30 MCQs कर जिबा, तो जेमती आपनकर मल्टीपल रिविजन हे परिबो। जदि आज वीडियो एंड कंटेंट आपण भल लागला, लाइक करंदु, शेयर करंदु एंड सब्सक्राइब करंदु हम चैनल। थैंक यू।